Listen to me when I say this, the Prince of Persia made our childhood along with all the iconic games in that era. हम सब ये जानते हैं कि after 2013 Ubisoft was going down the drain with their fucking microtransactions. I mean, what do they expect? लेकिन उससे पहले they released such good games. They have a great catalog. Games like Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Splinter Cell, Watch Dogs, and lastly, Prince of Persia games. Let's start from the beginning. When a guy named Jordan Mechner was working on a game called Karateka, which was a success, and उसके बाद he took inspiration from this game and some other sources like Arabian Nights, Indiana Jones, Robin Hood, and made the original Prince of Persia game in 1989. The game was incredible and unique for that time बिकॉज इस बंदे ने रोटोस्कोपिक टेक्निक का इस्तेमाल किया इस गेम को डेवलप करने में. So basically he filmed his brother while doing all the stunts. After that he drew all the animations to implement the game, which is crazy by the way. This game took a lot of effort to make and it actually did pretty well. But wait, I'm not here to talk about the origin. I am here to talk about the classical titles जो हमारे टाइम में रिलीज हुए थे. आई एम टेलिंग यू ब्रो, अगर तुमने कोई प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम नहीं खेला, यू जस्ट मिस्ड इंटायर गोल्डन एरा ऑफ गेमिंग. और जिसने ये गेम्स खेल रखी हैं दे नो मैं किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. लाइक डोंट लाई टू मी व्हेन आई आस्क यू के प्रिंस का पार्कोर देखकर तुम्हारा भी मन किया होगा ये सब करने का. एम आई राइट? एनीवन? यूबीसॉफ्ट की सारी गेम्स बोरिंग होती हैं इज़ व्हाट आई वुड हैव सेड अगर मैंने गेम्स ना खेली होती तो. हाँ, मैं मानता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रिंस ऑफ पर्शिया इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी. हमारे रीजन में पीपल लव दीज गेम्स एंड दीज गेम्स लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट अ प्लेटफॉर्मर गेम लुक लाइक. वाई वी लव दीज गेम्स? बिकॉज हम इनसे रिलेट कर पाते हैं. द वर्ल्ड सेटिंग, द इन्वायरमेंट, द म्यूज़िक. And especially the history. We can say that Ubisoft done his homework pretty well. Now I am here to encourage you to give these games another chance because at the end of the video you will probably want to experience this golden nostalgic period again. The best thing about these games are the time shifting abilities. 40-year-old me lost it when I figured that Prince can go back in time and undo his mistake. Like this was one of the coolest technologies implemented in a video game. अगर तुमने ये गेम कभी नहीं खेला तो ये probably तुम्हारे लिए एक लाइफ स्ट्रेंज वाला मोमेंट होगा. सीरीज़ की पहली गेम थी प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम which came in 2004. Do you know प्रिंस का वॉइस एक्टर कौन था? The same guy who played Ben 10, Sasuke from Naruto, and Spider-Man from Insomniac Games. And the guy name is Yuri Lowenthal. I hope I'm pronouncing it right. अगर तुम मुझसे पूछो कि तुमने इस गेम को कैसे खेला, आई वुड प्राउडली से मैंने इस गेम को पायरेट करके खेला बिकॉज दैट 40-year-old kid don't care about his moral values. And man, I love this game. I've played this game 6 times और हर बार खेलने पर एक नया एक्सपीरियंस मिला है. Even Harry Potter played this game and he loved it. ड्यूरिंग द गेम तुम्हारी एक पार्टनर होती है फारा जो गेम में तुम्हारे साथ होती है. पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ सैंड्स ऑफ टाइम में ही था और दूसरी गेम्स में नहीं था बिकॉज डेव्स थॉट दैट इट्स अ बैड आइडिया एंड ऑनेस्टली इट वाज. फारा का AI वाज सो डम. दिस बिच ऑलवेज गेट्स स्टक इन द वर्स्ट सिचुएशन. आई रिमेंबर playing the game, she just fell and die and it made no sense. Then maybe वो game बहुत ही पुराना है, that's why it's buggy. Look, the point is game is not that hard. It's straightforward and easy. But ये औरत तुम्हें rage bait करवाती है. Another cool thing in this game is the loading icon which represents the instrument called the astrolabe which was used by medieval era Muslims to locate the direction of Makkah. Honestly मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था. आई जस्ट रिसेंटली फाउंड आउट. एक और कूल डिटेल मुझे जो इसमें मिली है ना इज़ दैट देयर आर थ्री swords इन द गेम. ईच ऑफ देम हैज़ दिस अरेबिक प्रिस्क्रिप्शन ऑन देम which represents the sword of mighty, the avenging, and the enlightened warriors, which proves that Jordan Mechner was really inspired from the Arabic. Let's talk about the music in these games. The reason I played this game is because of the music in Warrior Within. It has one of the best soundtrack in any video game in that time.
Meet Stuart Chadwood, the audio director of the Prince of Persia games. He gave us a banger music. The reason I played Warrior Within is specifically for its music and also because Monica Bellucci played Kailina. Warrior Within खेलते time I realized that Prince has completely changed over the span of 2 to 3 years. उसकी personality, उसका tone, उसका getup. He's a completely different man now. पहली गेम में he was all cool, calm and gentle guy, but in Warrior Within he's always tense, angry or scared, which is a big character development. It could be the loss of his brother that gave him a scar and made him tough, or it's a completely different monstrosity. Yes, some of you already know मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ. The Dahaka. Trust me when I say this that this guy is a nightmare of every 20s kid. उस टाइम गेम्स में चेस सीन्स का कॉन्सेप्ट वाज न्यू टू एवरीवन. व्हेन ढाका इज ऑन योर एज तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है. एंड दैट फियर ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग कि भाई यहाँ से अब कहाँ जाया जाए. और जब स्क्रीन में से कलर्स चले जाते हैं, व्हेन दैट म्यूजिक किक्स इन. मैन दैट म्यूज़िक, वो म्यूज़िक तुम्हारे अंदर एक एड्रेनलिन ट्रिगर करता है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम. ढहाका इज़ द रीज़न प्रिंस की पूरी गेम में फटी होती है. बिकॉज प्रिंस इज़ बीइंग हंटेड बाय हिम द इंटायर गेम, जो इस गेम की स्टोरी को एक ब्यूटीफुल नैरेटिव देता है. दैट वाई प्रिंस इज़ ऑलवेज टेंस, कंज्यूम्ड विद फियर एंड रिग्रेट. हाउएवर वॉरियर विदिन का कंपैरिजन किया जाए पहली गेम से, गेम के विजुअल्स में अपग्रेड आया है, वो थोड़े पॉलिश्ड हो गए हैं. द प्लेटफॉर्मिंग इज़ अ लिटिल बिट फास्टर एंड ईजी. वेपन्स में वेराइटीज़ आ गए हैं एंड एनिमीज़ में भी काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं. एंड वन मोर थिंग, देयर आर सम बॉसेस इन द गेम इंक्लूडिंग द ढहाका बॉस फाइट जो लास्ट में होती है. Now the reason I want you to play this game because no other sadistic game would want you to beat the shit out of crows with the stick right at the start of the game. The thing that I have zero knowledge of and completely missed and still regret to this day that these games have cheats. Wait, what? I didn't know Sands of Time में अगर तुम X बटन को होल्ड करके रखो and then you press space, left mouse button ECE space, left mouse button and C, you can enter a 2D level in the game, and at the end of that level you can enter a secret room which has this big picture of all the developers. ये रूम एक तरह से डेवलपर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है, विच इज़ ईजिली मिसेबल. वॉरियर विद इन में तुम्हें ओपी वेपन्स मिल सकते हैं. टेडी बियर, ग्लोइंग स्वॉर्ड, हॉकी स्टिक, रेमैन आर्म एंड पिंक फ्लेमिंगो, जो बहुत ही सीक्रेटली छुपे होते हैं और तुम्हें ढूंढने पड़ते हैं. टू थ्रोन्स का स्टेल्थ वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस. हाँ, वॉरियर विद इन में भी स्टेल्थ है, लेकिन दैट गेम इज़ ऑल अबाउट रशिंग एंड टैंकिंग एनिमीज, सो स्टेल्थ डजंट सूट दिस गेम. वेयर एज टू थ्रोन्स के अपने स्टेल्थ सेक्शन है. लाइक यू कैन गो स्टेल्थ एट almost every enemy encounter in the game. The best part about these games are the boss fights. This game has its own cool moments and those are the boss fights. मेरा फेवरेट बॉस फाइट है इस गेम में when you fight two soldiers, and just like its predecessor, this game also have cheats. Like you can have a fucking chainsaw in this game, and that's it, man. I don't think this game has anything else to offer. I don't have a huge love for this game. I know many people loved it, but I just couldn't give the same amount of love I give to the other two. Look, nothing can beat the horrific chase scene from Dahaka. His design is so awesome. Like उसके जो horns हैं वो infinity का symbol बनाते हैं. And one more thing I love about this game that Dahaka speaks in a foreign language, which is not true. अगर तुम उसे reverse में सुनो, he's actually speaking English. And man, I love this detail. Now if you're a person like me, you would probably want to go back and play this trilogy for the last time. But that might not be possible because these games are more than 20 years old now and they are not what they used to be, at least for the PC ports, because these games have so many bugs, glitches. Look, all I'm saying is that you have to be extremely lucky to get through these errors. Now before the trilogy, Ubisoft decided to make another Prince of Persia game, and which they did,
but they dropped the plan and they didn't drop the project because उनको उसमें बहुत ज़्यादा potential दिखा. So they named it Assassin's Creed. Now we know AC games are actually inspired from pop games. एक मिनट के लिए trilogy को साइड पे रख के let's talk about the Prince of Persia reboot, which could do so well but it didn't. अब मैं इस गेम को कैसे डिस्क्राइब करूँ? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल पेंटिंग एंड कलर्स आर मूविंग एवरीवेयर. अगर इस गेम को हम 2008 में किसी दूसरी गेम से कंपेयर करें then this game surpasses everyone in terms of visuals. Even I was hooked in while I was playing this game. इस गेम का पार्कोवर इज़ वेरी स्मूथ जो दूसरी गेम से बहुत डिफरेंट है. इट्स नॉट स्लो और ना ही ज़्यादा रश किया गया है बट रैदर सेटिस्फाइंग. गेम का कॉम्बैट इज़ डिफरेंट और थोड़ा सा रेपिटेटिव है बट द बेस्ट पार्ट इज स्टोरी. इस गेम की स्टोरी हैज़ अ बिट डार्क टोन टू इट जो इस गेम को सूट करती है. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं इस गेम को खेल रहा था मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई यूबीसॉफ्ट का गेम खेल रहा हूँ. इट वॉज लाइक अ विजुअल ट्रीटमेंट फॉर मी. हाउएवर द म्यूजिक इज़ ऑल्सो गुड एंड इट विल सेट द मूड राइट इन. इस गेम के स्टीम पे रिव्यूज़ आर मिक्स्ड एंड विच इज़ सैड एंड दैट इज़ द रीज़न यूबीसॉफ्ट को ये गेम होल्ड करना पड़ा because they were expecting something good from this game, on which I am with Ubisoft because this game deserved better. One more reason was the game budget. इस गेम में बहुत ही एक्सपेंसिव ग्राफिक्स टेक यूज़ किया गया था. It couldn't even match the developing cost. Now I highly recommend you to check this masterpiece. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा. नाउ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके एक साल बाद फॉरगॉटन सैंड्स भी तो रिलीज़ हुई थी which performed really well. But I did not like this game in terms of difficulty. This game is a cakewalk. स्टोरी बहुत वीक है. गेम पहले ही इतना ईजी है और उसमें स्किल ट्री घुसेड़ दिया है. I mean the prince has elemental powers now. Like what is this? A fantasy bullshit. पूरी गेम में सिर्फ एक बॉस है जिसका नाम है रताश. That boss is a joke. इससे घटिया बॉस मैंने आज तक किसी गेम नहीं देखा. आई नो so many people played this game and they loved it. Well, I would say in terms of visuals the game does stands out but in gameplay terms it lacks so many things. Do you know the first Prince of Persia game was in 2D and the second game was also in 2D. In fact उसके बाद भी उन्होंने 2D टाइटल्स निकाले but what is the best 2D Prince of Persia is the Lost Crown. If you love Hollow Knight then this game is for you. It has that fast-paced Metroidvania energy that every 2D game lover wants. Lost Crown की story sets way before the sands of time, so you're not missing anything. This game came out on many platforms, including your Android phones. This game is brilliant. टाइम ट्रेवल इसमें भी है लेकिन दूसरी गेम से काफ़ी डिफरेंट है. इट्स मोर क्लेवर देन दैट. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गेम आर द बॉसेस क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है. तुम बोर ही नहीं होगे. तुम्हें लग रहा होगा कि मेट्रोइडवेनिया है एंड बहुत रेपिटेटिव हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है. और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा होता है इस गेम में, हर मेट्रोइडवेनिया में होता है ऐसा. लेकिन ये गेम इतनी फ़न है कि तुम्हें ऐसा फील होने नहीं देगी. वेल इफ़ यू रियली वांट एक्सपीरियंस द बेस्ट मेट्रोइडवेनिया एवर मेड, वेल आफ्टर हॉलो नाइट, then I want you to check this game out. Okay, let's talk about the elephant in the room. Yup, I'm talking about the pop remake. That was never happening. Okay, let me give a quick summary of the development of this game. In January 2020 इस गेम का पहला ट्रेलर आया था जिसे देखकर people were not happy because this game looked so bad in visual terms. This game looked like a PS4 game for a 2020 era. The art direction was also bad. As you can expect from Ubisoft, they delayed the game from January to March for some visual enhancements in the game. But there was a rumor that game got cancelled. लेकिन उसके बाद Ubisoft ने एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया ये कहते हुए कि game is under development and this time the Ubisoft Montreal has took up the task for developing this game. The same company जिन्होंने the original Prince of Persia game develop की थी. But हम सब जानते हैं कि they were just only delaying the inevitable. Because in 2026 the game got cancelled. Ubisoft wanted to make the game from ground up, but they just couldn't do it, man. In the end, the original Prince of Persia trilogy took the crown, and भाई वो deserve भी करती है because its originality comes at a cost. And I think that's it for this long ass impressions. Let me know your thoughts on these games and hope for the pop games.